Very good morning to all the respected members. Thank you to Murtuza Bhai, thank you to Nikita and Ritesh for being here on Saturday and arranging a session for all the members. I also thank WIRC for arranging this kind of session, quite frequently, which is a good part for learning of members. Today we are going to cover our topic with regard to related party transactions. So the presentation or the topic mainly covers auditors' responsibilities with related party transactions. We all must be well versed. I can see there are a lot of seniors, respected members. So no one needs any kind of introduction. What does related party means? As such, it's a quite simple topic. But if we see in detail or in depth, it is quite complicated and it requires a lot of responsibility on the part of auditors while evaluating any kind of related party transactions or reporting on that. And in the present days, it's one of the most likable or lovable topic of the regulators, maybe NAFRA, maybe SEBI or any other authority. They harp on this a lot. So one of the fraud risk factor which is being considered as revenue. In addition to revenue, related party is also considered as one of the fraud risk factor. And they believe me, there can be related parties. There are listed companies where there are related parties which are in number. So what kind of number can anyone give me an estimate? Like what can be the maximum number one have seen in the related party detailing in case of financial statement? How many related parties are there? So may I ask this question to anyone? What kind of numbers you have seen in the financial statement with regard to the number of related parties specified? 400, 500? Yes, near to that. So in case of large listed companies, the related parties which are described in the annual report are somewhere near to 400, 350, 400 in that range. So to identify that kind of related parties, to keep a work paper for that and to document is very important. It's like this, that even if we have identified, we have seen like 400 parties and the names are disclosed. But if we miss out one or two names nowadays, and those are going to be very critical, the regulator will come out and will say that you have not carried out your process appropriately. So the importance here is that we carry out our process appropriately, diligently with full of skepticism, so that we don't miss out identification of any related party. In this kind of mammoth disclosure, we should be very vigilant. After doing everything, if something is being missed, which is beyond our process, that can be demonstrated and that can be conveyed. But otherwise, there is no possibility on the part of auditors to take any excuse that मैंने तो 400 parties का disclosure दिया है, 2 parties ही तो miss हो गई है, because the regulator will come say कि ये 2 party important थी, इसमें तो इतने करोड़ रुपए का transaction हो गया and there is a problem. So yes sir. Logistically, within a period of about 15 days from the end of 31st of March, audited accounts are published, signed, financed, everything. How is it logistically possible? It's very miraculous. Either there's something very fantastic as far as the audit firms, large firms are concerned in terms of technology or whatever. How do they do it? Sir, it's not like this that everything is being done in those 15 days. Definitely yes, that's a pressure period. But that's why the planning plays a very important role in the audit process. You are appointed as an auditor somewhere in the AGM, which happens somewhere in the month of August or September, at the most latest by that time, right? You're saying you have a period so during that period, you should carry out interim audit, you should look into controls, testing, IFC is there, which is applicable for most of the entities, except for private companies below the threshold. So that planning is important, that process is important. Those 15 days will be required only for you to test the last, journal entries or critical transactions. But before that, you need to seek control on and comfort on all the relevant matters, which does not get harped on the last minute. I'll just add on to this. I was a treasurer of Scoopers and we used to do the Hindustan those days when I was quite young. So we used to be
always, at the field only. In a quarter, we used to get somewhat around 10 days that you are out of HLL and you are doing some other assignment. So that kind of entire, you let up doing only 1 or 2 assignments in your career. I mean, that articleship period or whatever. It depends upon the size of the company, I mean, and again, the kind of work and the kind of The team. auditee and the auditor, Yeah. both. Yeah, both. Yeah. Both sizes are important. Yes, it's very And important. otherwise, you will not be able to deliver. So, with this, I mean, we'll begin. So, some of the content which I have described here in the slide, I mean, which we are going to cover in our today's presentation, I mean, much more in detail rather than this. So, just to add on here, in our today's presentation, I will not only touch upon the auditing standard with regard to related party, I will also cover the aspects with regard to accounting standard, Ind AS, Companies Act or LODR, which will be more beneficial and useful for you to understand the overall perspective of the requirement of auditing standard. If we look auditing standard in isolation, that may not be that worthy. So I have covered everything from that perspective. I said related party is one of the critical aspect nowadays, and SEBI or NAFRA, they are very much harping on this. So we must have seen or read the news, like if anything comes up, the regulator looks into hindsight, then this should have been reported. I mean, there have been certain NAFRA reports where it was like this, that the previous auditor who had moved out of rotation has not reported a related party, and the incoming auditor has reported. But in the comparative period, it was not reported because it was not there in the previous year. Whereas actually it should be a related party during the previous year also. NAFRA had issued notice to both the auditors to give the explanation that why it is not there. So this is like this, or recently we have heard that SEBI had shown its displeasure with regard to PTM's related party transaction, some of the related party transaction where audit committee approvals have not been obtained. So, who is a related party? I mean, if we see, related party is a very vast gamut. So, related party will have a different kind of definition under different regulation. So, Section 276 of Companies Act will say something else. There is a SEBI LODR which is applicable to a listed company. There is Accounting Standard 18 which is applicable to unlisted entities or below the threshold criteria, where again there is a different definition. There is Ind AS 24 which will be applicable to listed entities, and then INB, Insolvency and Banking Code, again there is a different requirement. In addition to that, IDA has recently come out with a guideline with regard to identification of KMPs and to frame the remuneration guidelines with regard to that. Or RBI or NHB has prescribed the disclosure requirement with regard to NBFCs, which are certain additional requirement as compared to what has been disclosed as per Ind AS 24. So, this slide briefly depicts the categorization of related party transactions under various provisions of law. So, under Companies Act, I mean, Section 276 covers the need of the related party definition. Then Section 177 and Section 188. So, this is with regard to Companies Act. With regard to SEBI LODR, the regulations are prescribed in Regulation 2, ZP, ZC. So, I mean, these are the regulation numbers. And the accounting standards, so AS 18 and Ind AS 24, what we have discussed. So, here if we see, I mean, the related parties are different under different scenarios. So, like the definition of senior citizen will be different under different guidelines. So, it is something similar to that. And if you are the auditor of a particular entity, you have to keep hold of all the definitions when you are doing the work, because it is very much important and the document has to be done accordingly. So under Companies Act, the definition is given here. I am not going much in detail. This is for the understanding purpose. Ind AS 24, again there is a definition. So in Ind AS 24, if we see, the focus is more with regard to control or joint control of the reporting entity, significant influence, and if a party is a member of KMP of the reporting entity or a parent of the reporting entity. So for example, if we see there is a person called, for example, Arun, for example, and he is a KMP of the parent company, and I am the auditor of a component of a subsidiary company, right? So when I am disclosing the related parties or identifying the related parties, I'll have to see that the person called Arun, who is a KMP of my holding company,
will also become the related party of my entity. I mean, that has to be disclosed by way of disclosure. And if the transactions are required to be disclosed, that has to be disclosed additionally. So, Indians focus more on the principles, I mean, rather than rules. So, like control or joint control, significant influence. So, it's a very vast definition. AS 18 describes specifically the kind of relationship which are required to be covered. And then we have SEBI LODR, which again defines or describes. So, earlier the definition was different under SEBI regulation. So, it was creating a lot of trouble when it was introduced. Then it came out with a solution. It says that it will be a combination of Companies Act and Ind AS or AS. So, I want to ask a small question. All listed companies are required to follow Ind AS, right? Am I right? There can be certain listed entities who are not required to follow Ind AS. So, for example, those listed entities which are SMEs. So, SMEs are not required to follow Ind AS, they are required to follow AS. So, here that's why it says that under the applicable accounting standards under SEBI LODR guideline, it can be AS or Ind AS. Two important things which are differentiating in SEBI LODR as compared to Ind AS or Accounting Standard or Companies Act. One is it says that any person or entity forming a part of the promoter group of the listed company. So we all know that promoter is required to be identified and described in the key documents of the company or in the annual return of the company. So there may be a possibility that promoter may not hold significant stake in the company or is not on the board. So there are many companies where promoter is not on the board of the company, but they are indirectly controlling everything. So SEBI says irrespective of that, I mean if a person is identified as a promoter or a part of a promoter group, that will also be called as a related party. So that is required to be considered from the perspective of LODR for disclosing the related party transactions and the list of parties in the financial statement. Similar to that, from 1st April 2023, SEBI came out with a further amendment. It says that if a transaction, any person or any entity holding equity shares in the listed entity, either directly or indirectly, holds more than 10% of the shareholding in that company, then that person will also be called as a related party. So we have mostly understood the definition of significant influence from the perspective of 20%. But this is something which is beyond that. This is with regard to 10% also. So any person holding 10% will also be called as a related party from SEBI LODR perspective. So this is a definition, extension of definition which you have broadly covered. So these are the various related party transactions. This has been broken here. So if we see like under Companies Act, the related parties transactions are specified mainly with regard to like sale, purchase or supply, selling or otherwise disposing of or buying of property or any kind. So they have specified certain set of transactions. So under Companies Act, they have said that if these are the transactions, they will be considered as a part of related party transactions where the approval mechanism is required to be kept in place. Whereas in LODR, it says the transfer of resources, services or obligation. Again, it's a very wide gamut, so it will cover everything. Companies Act has somewhere restriction to certain set of transactions, so it has an exclusive kind of definition. Other than that, if any transactions are carried out, though they may be related party transactions, it may not require approval under the provision of Companies Act. But if it's a listed company, it may get triggered under SEBI LODR. Now, we all have seen the definition of related party under various regulations. So, mostly I have seen that people have this kind of thought that related party is something, a related party which is defined under Companies Act or Income Tax Act or Ind AS or AS. But friends, we should be also aware that related party is also defined under auditing standard. And this is an extension of the requirements which are specified under the various regulations. So SA 550 deals with related party transactions. Now SA 550 says, what do we mean by a related party? Related party means a related party is defined in the applicable financial reporting framework. So what do we mean by financial reporting framework? For example, Ind AS is applicable, then that framework, AS is applicable, then that framework. If we are doing tax audit, then maybe Income Tax Act and Accounting Standard or Ind AS respectively. So
according to financial reporting framework, related party will get covered. Or in case if it is not described or minimal thing has been described, then it extends the definition. It says a person or other entity that has control or significant influence directly or indirectly. So it's an extension of that arm. But what is happening, like for example, in certain set of cases, like in case of small entities, accounting standard 18 may not get applicable, right? So there will be some exemptions. But then auditing standards are applicable everywhere. There is no exemption. So even though accounting standard will not be applicable, auditing standard will be applicable. You are the auditor of that entity, you are supposed to take cognizance of that. It's only an extension of all those kind of definition. But this is very important for one to know that there is a separate definition under auditing standard, and you will have to take care, and you will have to seek, or you will have to draw a line for differentiation between all the respective guidelines, so that your work paper is complete, your process is complete, and you can give a report with an opinion which gives true and fair opinion. So another entity over which the reporting entity is control or significant influence. So these are broadly kind of described terms under SA 550 with regard to related party. It says that however entities that are under common control by a state are not considered related. So like for example, two government companies or something like that, unless they engage in significant transactions or share resources to a significant extent with one another. So this kind of exemption is more or less there in the standards also, but one has to see from that perspective. So what are the auditor's responsibilities here? I mean, today's topic is with regard to auditor's responsibilities to deal with the related parties. So this slide briefly gives you the glimpse of the responsibilities which the auditor is supposed to carry. So one is like for example, financial statements having RPDs achieve a true and fair view and are not misleading. I mean, this is the one of the key objective of the or key responsibility of the auditor to see. Second is communication with those charged with governance. There is a separate auditing standard which deals with communication with those charged with governance. So under that auditing standard, the requirement is that you as an auditor are supposed to communicate to the audit committee members or the board members wherever audit committee is not there, the information about the related party transactions, its approval mechanism, etc. Are you convinced, not convinced? I mean, all those discussions are required to happen under this particular standard. Then auditor should identify related party relationship. So what we discuss, related party relationship is very important. So like, there is a spouse, parent, mother, sister, from the perspective of individual, from the perspective of any enterprise, it will be like holding company, subsidiary company, associate, joint venture, etc. So identification of related party is very important. Relationships. Then should identify related party transaction. So how do we begin? आप शुरू कैसे करेंगे? आपको related party का अगर कोई भी transaction देखना है, evaluate करना है, सबसे पहले आपके पास पूरा data bank होना चाहिए कि उसके अंदर आपके पास कितनी तरह की related parties हैं और last year किस तरह की related parties थी, whether there is any addition or elimination in that. अगर addition या elimination है, you should discuss with the management. क्योंकि जो पिछले साल है, if it's a ongoing assignment या ongoing entity, you will have that, low hanging fruit, you can grasp it from that, and in addition to that you can seek further information. तो वो आपको जानना ज़रूरी है कि कौन सी related parties हैं और then what are the transactions with them. Then that's will be the second step. Another thing, important thing nowadays regulators say, so whether the transactions are in arm's length or not. So not in all the cases it will be relevant, but this is always expected nowadays by the regulator, that when you are doing the audit, you should also look into that the transaction carried out with the related parties are at arm's length. So related party transactions are something like they are very prone for fraud risk. आपने देखा होगा जहाँ कुछ कंपनीज है जहाँ बहुत सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होते हैं या जो इंसॉल्वेंसी में जा चुकी है जो कंपनीज जहाँ बहुत सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं, देयर इज ऑलवेज अ हाई रिस्क, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी that something has gone out of the company or something has been taken into the company by way of an impact which should not have been taken by way of a related party transaction, because the arrangement can be done between the related parties quite easily and quickly. So this is also one of the requirement. तो arm's length आप कैसे evaluate करेंगे?
आर्म्स लेंथ के बारे में कोई बता सकता है? आई मीन दो आई हैव कवर्ड वन ऑफ द एस्पेक्ट इन द नेक्स्ट स्लाइड, बट कोई इसके बारे में कुछ कह सकता है? Similar transaction if you do with a third party, that is something a benchmark to ensure that you had an arm's length transaction. At the same time, transfer pricing would be a good report, study report to be used to ensure or to satisfy as an auditor. So those observations, I think these are the things, and comparative with the other industries also could be a benchmark. Comparative with the other industries, I mean, this information may not be handy or available in public domain. So you say it very much right, ma'am, for the first 2 points, that transfer pricing, if the transfer pricing norms are applicable to the company will anyways have to carry out that activity and report has to be given. So you can evaluate and get a comfort that whether the transaction is at arm's length or not. And then you can seek the transaction carried out by the company with the third parties. But in addition to that, I mean, there can be a possibility that there are no transactions which are carried out by the company with a third party. I mean, those kind of transactions are only carried out with the related party. But in that case, you will have to seek information from the public domain. For example, if the premises are given on the lease, there are no third party transactions by the company with the related parties. Then, I mean, you can see what are the average rate or the rental rate in that particular area for that kind of premises, etc., etc. So, arm's length evaluation is very important. And nowadays, in many of the corporates, good corporates with good governance, I mean, they ask the auditor or they hire the internal auditor or any external professional to certify the transactions about arm's length evaluation. So maybe on quarterly or half-yearly basis to give the comfort to the audit committee members, because ultimately audit committee members are also responsible, and within few minutes or few hours of discussion, audit committee members will not be able to say or get convinced that the transactions are at arm's length. So that gives a comfort. So this is also one of the process which is being carried out by good governance kind of companies. Then appropriate approvals have been taken for the related party transactions or not. This is also required to be seen by the auditor. So if there is no approval of audit committee or no approval of shareholder if it is needed, or no approval of board, then the transaction cannot sail through. So the example which I have given, like in case of Paytm SEBI has clearly shown their displeasure that the transactions were not approved by the audit committee members. So approval is something which is very important, because when one approves this, so they take cognizance of this. So the audit committee members or the board of directors are getting responsible from that perspective. And then auditor should, yeah, please. So in these anti-transactions, in the beginning of the year, they just take a omnibus approval or whatever you can say, and then it needs to be ratified at the year end, or that omnibus approval is okay. What this mechanism is okay. No, so omnibus approval when you take, you have to take, it's always advisable that you take it on a higher side rather than on a lower side, because it is required to be taken for recurring kind of transactions. So ratification is something, if it can be avoided, should be avoided, because under SEBI LODR guideline, there is no mechanism for ratification. You cannot ratify. So like if you are expecting that you have taken an approval for a transaction for 10 crore, and when you are on the verge of that limit, maybe or near about 8 or 9 crores of the transaction, for example sale or something like that, and you are still envisaging that the transaction will go somewhere near to 15 crores or 18 crores, it's advisable that you take approval before you carry out the transaction, because it will not happen that you have taken approval of 10 crore and in one transaction only you will carry out the transaction for 15 crores or so. It will be in bits and pieces. That's how you will envisage at the beginning of the year. So if you are on the threshold of exhausting that limit of omnibus approval, it's advisable that you take approval beforehand. In some of the cases there are miss-outs or lapses which are happening, but then it should be done. But then ultimately under the present norms, it's a lapse. Suppose throughout there it is within the limit. In our example, 10 crore omnibus, throughout there 8 crore. Then also year end, after year end it needs to ratify, or? No, because you have already taken approval. Ratification is something which has been breached, where again it has to be brought to the knowledge of audit committee members or board members or shareholders. So in that case ratification is needed, but if it is well within the limit for which approval has been sought, then there is no
Yes, Right. yes. So there are different mechanisms, I mean different norms. So audit committee is there, board is there, certain set of transactions where approval of shareholders will be required by way of EGM or EGM. So there are different mechanisms. So where there is no audit committee, yes, board and shareholders wherever applicable. It is one thing, as per section 188, whether loan transaction would cover under 188 or not. Loan transactions gets covered. Loan transaction gets covered. I mean, one has to see what kind of definition is there. It says service and all. Yeah, if you, in 188, if you see that loan is not mentioned there. Explicitly. It's not specifically stating there. I mean, there are mixed views in the corporate world. As a part of good governance, some companies take as a part of. So if you see otherwise, I mean, 188 it may not be required. But from the perspective of SEBI LODR, if it's a listed company, by default it gets applicable. So if it's an unlisted company, right, then LODR guidelines are not applicable. Then one can take a shelter of that 188 provisions are not applicable for reporting in CARO or for taking approval. But other than that, I mean, it's a related party transaction. So for arm's length evaluation, like loan given interest free rate, etc., one will be required because any which ways in CARO also you are supposed to comment the transactions carried out with related parties are prejudicial to the interest of the company or not. That's what I coming. So maybe from 188 perspective it will not be needed, but from other perspective it will be needed. In balance sheet disclosure, AS18 covering it. Yes. We are giving there. But when it comes to 188, when we report CARO, so the client argues, companies argues that 188 doesn't cover the loan. So I just want to know whether 188 covers or not covers. In your view? No, so in specifically, so in CARO there are two separate reporting requirements. One is about 188, second is about prejudicial. So 188 it will not get covered, but from prejudicial you will have to evaluate that whether the transaction is prejudicial or not. So for example, if the company has taken loan at the rate of 12% and it has given loan to its associate or any group entity, not wholly owned subsidiary, at free of cost or maybe 3-4%, something like that, then it is prejudicial to the interest of the company. So then one has to look from that perspective. So our view was that the service also covered, the lending is a service and hence covered under 188. Is it right, our interpretation, or loan should be out? So loan will be for service, like it will be for NBFCs or like banks, right? In case of normal company, it will not be called as a service because loan is not classified or called as a service under the provision of Companies Act. If it's a loan making company, then one can say, one can argue. Otherwise, it's difficult to say. So it depends again on the nature of materiality of that transaction and from the various perspectives. So from that perspective, one will have to see that it is required to be covered or not. But 188, no, it will not be required to be covered. Yeah. Aren't the loans covered under section 186? Because we do a reporting, so or the proposal which we give, we can. So it will get covered, but for example, like there is an exemption for certain set of companies like infrastructure company or real estate companies, etc., etc. So it depends, but then 188 requires approval of the audit committee and all. So from under which clause you are reporting under CARO, it depends upon that, and based on that you will have to evaluate, and the reporting will have to be done accordingly. The last point on this slide, the auditor should remain alert when reviewing records or documents. This is one of the requirements of the auditing standard, that the auditor should remain alert when reviewing records or documents. The auditing standard says very categorically on this part. We'll discuss in detail when we'll go to the subsequent slide on this particular matter. So scope of essay, it expands, essay, so essay 550 deals with 5 specific parameters. One is about the scope of essay, what is the scope of that auditing standard, what are the objectives of the auditor, what should auditor do in case of related party transactions, requirements of the essay, identification of previously unidentified or undisclosed related party transaction. So if previously something has not been identified and if it is identified, what should be done, and identified significant related party transactions outside the entity's normal course of business. So broadly these are the 5 parameters around which this essay revolves. The scope of essay covers that essay 315, 330 and 240, mainly dealing with like identifying and assessing the risk of material misstatement
or auditor's responses to assess risk or auditor's responsibilities related to fraud are to be applied in relation to the risk of material misstatement. So mainly these three standards are required to be covered when you carry out the process with regard to identification and disclosure of related party transactions. SA 550 further specifies that where the applicable financial reporting framework establishes the requirement, auditor should see that the disclosure or the transactions are carried out in accordance with the requirements of the framework. So for example, what we have discussed, that if Ind AS or AS is applicable, one has to see from that perspective. It further says that even if the applicable financial reporting framework establishes minimal or no related party requirements, the auditor nevertheless needs to obtain an understanding of the entity's RPT and transactions. So it very categorically says that though the framework may not be applicable, the example which I have given, that in case of small companies where there are exemption of the accounting standard, etc., or the requirements are very minimal, still it says the auditor is required to understand the entity's related party relationship and transaction. So there is something which one has to keep it into their consideration. Then in addition to that, it says that an understanding of the entity's related party relationship and transactions is relevant to the auditor's evaluation of whether one or more fraud risk factors are there or not. So for the purpose of evaluating fraud risk factor, this is very important. I mean, the entire gamut of related parties one should be aware of. And related party transactions, as I told, are prone to fraud risk and it can be very easily targeted. Meeting the requirement of SA 315, it says identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. So as I said, 315 deals with identifying the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. So it says auditor may consider features of the control environment relevant to mitigating the risk of material misstatement associated with related party relationship and transaction, such as, so how it can be mitigated, like by looking into internal ethical codes, whether they are appropriately communicated to the personnel of the organization or not, what are the policies and procedures. For example, in case of listed companies, SEBI LODR clearly says that material related party transactions policies are required to be defined and uploaded on the portal of the company. So it has to be first approved by the audit committee and board of directors, and then it has to be uploaded on the website of the company. So what are the policies and procedures? So like once you are going to carry out the audit of a listed company, you can get this handy. I mean, you can get a comfort that what is the mechanism of the company on that part. The assignment of responsibilities within the entities, so like who is the owner of holding the complete control with regard to identification of related party transactions, etc. Periodic reviews by internal auditors, so even when the internal auditors are carrying out the review, so as an auditor, as a statutory auditor, you can always see that whether it is there in the part of their scope or not, as a part of yearly exercise to cover the gamut of related party transactions or not, and if it is there, how they are commented upon. And if you feel that the transactions are quite large, you can have a discussion with the management, with the internal auditor to get this captured, because many a times it may be a possibility RPT transactions are not getting captured in the internal audit report for the entire year. So this will also ease out your work as a statutory auditor. You can take a comfort from that perspective. Proactive actions taken by the management to resolve related party disclosure issues. So I mean, management upfront comes and discuss with you as an auditor, or maybe seeking a legal opinion or legal views that I am carrying out transaction with XYZ entity or with XYZ party. Though this is a material transaction, I believe there is a grey area and this will not fall part of related party transactions. So if there is a proactive approach, that is also good and that can be handy for you to conclude on this part. Then meeting the further, I mean, timely disclosure and discussion between management and those charged with governance. So timely discussion is important and disclosure is important once again. And communications with those charged with governance, it is required everywhere in the auditing standard, Companies Act or LODR guidelines. Clear guidelines for approval of related party transactions involving actual or perceived conflicts of interest, and the existence of whistleblowing policies and procedures. So if there are whistleblowing policies and procedures, one can look into things, and there can be a possibility that through whistleblower may have commented upon
with regard to some of the transactions which are in the nature of related party, which are alarming. So that can also be quite handy for you for the purpose of considering for disclosure. Maintaining alertness for related party information while reviewing the information. So the essay says that you should be alert while reviewing the information of related party. It says that if the auditor identifies significant transactions outside the entity's normal course of business while performing the audit procedure, the auditor shall inquire management about. So if there are significant transactions which are outside the normal course of business, so for example it says complex equity transactions, transactions with offshore entities, leasing of premises, sales transactions with unusually large discounts, etc. So these are the alarming or trigger point for you to understand or to evaluate. Upfront, you may see that this is not a related party, but if the transactions are unusual in nature, it may give you an alarm that ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये हर एक के साथ तो नहीं हो रहा है, तो इस केस में ऐसा क्यों हो रहा है स्पेसिफिकली. When you will lift the veil, you will come to know अच्छा ये तो indirectly यहाँ पे ये RPD में fall कर रहा है, ये beneficial owner है. So that will be quite handy for you. Transactions with circular arrangements काफ़ी बार होता है, A ने B को दिया, B ने C को दिया, C ने D को दिया. So like within the group the transaction gets rotated. So these are some of the alarming things from where also you can get the hint of related party relationship or related party transactions, which upfront may not be available or may not have been disclosed by the management. Transactions under contract whose terms are changed before expiry. So expiry होने के पहले change हो गया. So these are some of the examples. It focuses whether related party. Yes. Back to earlier slide, that circular arrangements, I think, is probably the most abused in a lot of organizations. Gitanjali We have Talks is come one of the across best cases of examples. such. Hmm. And there have been inquiries by the IT department, GST. And surprisingly, Amit, the kind of information that they have is unbelievable. So it's very, very important for auditors to keep a track of all this. You know, in one of the cases that I know of, like example, the IT department just came and gave a list of about 11 companies. Inside ye hai. That's it. I mean, the CFO had no answer because they had all the proper names which probably even the auditor had not flagged. So sir, what's happening nowadays, like because of IT, I mean information is quite easy to fetch and the regulators have all the source of information and they are interconnected with each other. So for example, maybe GST, Income Tax, Companies Act, and they are passing the information and they have their database in their portal immediately and they can fetch it. So, and there are various sources. For example, if a company is raising fund by way of, for example, listing their debt, so they will be coming out with a prospectus, public issue document. In that they will be capturing the information. But that information may not have been captured in the annual accounts. So that information is already there in the public domain. So one has to be vigilant. What kind of informations are available in the public domain? So those are kind of low-hanging fruit. And you cannot take a shelter कि मुझे बताया नहीं था, and that's a normal excuse कि ये तो management ने representation दिया है. We have relied on related party. It cannot be. MR is not a substitute. Not at all. Like, you know, when the IT portal was being revamped completely, Yes. people were saying, "Arey, upload nahi ho raha hai." But that was not the issue. The government was not paying 1,700 crores to enforcers to ensure that your return filing is proper. It was something else altogether. And we are now seeing the impact of all that. At that time, we chartered accountants kept thinking, "Arey, return ही file नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, ये glitch है, क्या enforcers ने किया," and all that. But that entire platform that was being constructed was something else altogether. और उसका result सब अभी दिखाई दे रहा है, you know, your AIS, PIS, 26AS, the kind of information that is available there. Even the client is now no longer able to fool you. You know, earlier there was a time he would say, "Arey, returns to file क्या? मैं तो सब data दिया है." You know, there was so much information which was not shared by the client for a variety of reasons. Now that is not possible. I mean, we have people, I'm sure this is a common thing across all CA firms,
I mean, we are telling the guy, boss, ye kya hai? You know, you've not told us. Hmm. That guy is also like a little Hmm. alarmed. Hmm. So I think all that is. Yes. So देखिए इसमें फिर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप टैक्स ऑडिटर हैं, यू आर डूइंग टैक्स ऑडिट ओनली, यू आर नॉट द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, तो आपको इन्फॉर्मेशन स्टैट्यूटरी ऑडिटर मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिल जाएगा. दैट्स अगेन अ काइंड ऑफ लो हैंगिंग फ्रूट आई विल से व्हेन यू आर डूइंग द टैक्स ऑडिट. और मे बी वाइस वर्सा, यू आर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर नॉट डूइंग द टैक्स ऑडिट, आप पिछले साल की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ले सकते हैं, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन फेच कर सकते हैं. सो दैट एटलीस्ट रिकन्सिलिएशन शुड हैपन बिटवीन बोथ द रिपोर्ट्स. इट शुड नॉट हैपन कि वहाँ कुछ और रिपोर्ट हो रहा है या कुछ मिसिंग है, यहाँ पे कुछ कवर है. So that entire linking of dots should always happen, and that will be always beneficial. Otherwise you can't take a shelter कि वहाँ दिया था, मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं किया. These are not the excuses nowadays. Actually, tax audit and the transfer pricing report are, I think, good guidelines for all this. Yes, I mean wherever it is applicable. So tax audit applicable, transfer pricing. I mean, for whatever reason, they knocked off domestic transfer pricing Yes. from the statute, but that could have helped substantially in identifying all these. No, but you take it other way around. For example, you are doing the transfer pricing audit. You are not doing the statutory audit or tax audit. Ultimately, you will have to identify it your own and you have to carry out the process. So you may be sitting in one position at a particular point in time. You may be sitting in another position at a particular point in time. But at both the places, you are acting as an auditor. So you are supposed to use professional skepticism and you have to take cognizance of all the information available in the public domain, and you can fetch it from the management to evaluate what are the related parties which are in existence. At least the TPR comes last. Yes. So at least Yes. you have a little bit of hindsight available. Yes. for that. Yes. Just to share an example of the circular arrangements and to take it forward, there's a very interesting case which I had seen in my professional life. See, the company will give you a list of related parties. The director's wife is a partner in some firm. It's all given to you. And you take it at face value. But as an auditor, it will be important to also search the databases of, let's say, the registrar firms and the LLPs. It turned out that that lady was also a partner in some other firm, which was not reported. And it turned out that there were transactions with that firm, and then A to B, C to D happened that way. Now this doesn't come out on the face of it. It could be management hasn't told you, but the second you scratch your head, that lady's brother is also somewhere. So what is related party is given in principle in all SEBI and ASAT and all. But the auditor at times you have to really scratch your head with IT and not only do your transfer pricing or income tax database. It says your the director's wife or somebody is partner somewhere. It will be important. The learning which I got was you need to see further The and then layers, see where the transaction. the is. layers then- of related parties. The layers and layers and Yes. Parties, related Yes. parties. And that becomes a very difficult task for even at times the CFO of Hmm. an organization to discover. I'm being Yeah, exactly. coming from the industry, telling you, it becomes very difficult for CFO in case it's not informed to him as to how the related party layer is being structured. The management, the owners, the promoters can do transactions without being discovered. True. So what will happen? And that becomes an onerous responsibility not just for the CFO but for the auditors as well. Yeah. So And now with the technology, as you said rightly, that's happening right now because the technological advancement that has happened under the IT Act and the GST, this information which is flowing so fast, all these transactions are directly available to them in the form Yes. of a. This is what is on a click, in number of seconds it will be available. And the artificial intelligence actually is helping Yes. the government departments Yes. to identify those transactions and catch we as the auditors. Gone are the days when the filing was happening in the hard copy, it was difficult to identify, search, etc. Now everything is there, and historical data can also be fetched on a click within seconds. So one has to be vigilant, and to answer to, or to extend to what you say, what will happen, suppose even if in these cases, something has been messed upon. So here what I have described is if the transactions are significant and complex in nature or unusual in nature,
one has to look from that perspective. So it may be a possibility that some of the related parties have been missed to identify or the transactions have been missed to identify. But there is a rare possibility that something has been missed and the transactions are not material in nature. Because if someone wants to do something intentionally, they will do some kind of unusual in nature. There will be either heavy discounts, heavy rebates, circular kind of transactions or so. These will be alarming situations from where you can fetch, you can trigger. If something has been missed which are not material in nature, that would not create any kind of cause of concern for the auditors. But if something which has been missed which is significant or material in nature, one cannot take shelter of that. Correct. So this, just to take the example, what was the unusual which was caught was that every month there were 1 or 2 transactions with that party. And it just happened that, okay, we start to investigate that why only 1 or 2 transactions. It was not sale of goods, some raw materials got sold, some stores got sold. So again, coming to that unusual transaction. So that's the trigger. Yes. But the point is that when as an auditor sitting somewhere in the beginning of the year, you're doing the review of related parties, it's better to get the team also with their antennas up to say, we may have to do something more to go beyond the list what the management is doing. True. So that's what I told in the beginning, that you are not supposed to simply rely on the list which is given by the management. This also you have to do. And it's a part of planning process. So once you are onboarded as an auditor, like for 5 years in case of statutory auditor, so once you are onboarded, you start the process, and this is one of the significant area. And it takes good amount of time. And I have seen that like people are quite casual in nature sometimes. And I'm not saying for everyone, but sometimes it is related party दे दिया क्या है इतना ही है आ गया disclosure हो गया. It's not like this. I mean, this is one of the significant things which requires disclosure. And the information which you give in the financial statement is being looked at, critically evaluated by the regulators, whether it is MCA or Income Tax Department or GST Department, etc. Then a related party could be involved in significant transaction outside the entity's normal course of business, not only by directly influencing but even by indirectly influencing through an intermediary. So again, this can be a trigger point for one has to remain alert. Identification of previously unidentified or undisclosed related parties or significant related party transactions. So standard also deals with this requirement that if you have identified something which was not previously identified or not disclosed, how you will deal with that particular aspect as an auditor, or what kind of procedure you should carry out. So it says that you should immediately communicate about this to your engagement team, like what we are discussing right now, so that engagement team looks into in more detail and become more vigilant to evaluate from the other perspectives that they are not missing out anything, whether it was an intentional miss or unintentional miss, or was it a conscious decision which was taken in the past. There was some discussion and now the regulations have changed because of this parameter of disclosing the related parties have changed. All these things are required to be factored upon. Then it says that substantive procedures relating to newly identified related parties or significant related party transactions are required to be carried out. So for example, like making inquiries with the management about the relationships and all, conducting an analysis of accounting records for transactions with the newly identified related parties, verifying the terms and conditions. Arm's length transaction which we have discussed, the standard says that management is responsible for the substantiation of an assertion that the transaction is carried out at arm's length basis. However, you as an auditor are still supposed to see and look into that, because in CARO and all, you are supposed to comment and it is very much important. So, evaluating management support for this assertion may involve one or more of the following: considering the appropriateness of management's process for supporting the assertion, verifying the source of internal or external data. आप देखेंगे जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि रेंटल ट्रांजेक्शंस हैं तो मार्केट में क्या रेट चल रहा है, इंटरनली अगर नहीं हो रहा है तो रीजनेबल है नहीं है ट्रांजेक्शन. ऑल दीज थिंग्स शुड बी फैक्टर्ड. Illustrative procedure, आप related party कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? I mean, we have discussed about the kind of related parties, क्या होती हैं, क्या transactions हैं, कैसे करना है, etc. But the basic question कि related parties आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आप अपना काम शुरू कैसे करेंगे? क्या point होगा? So for example, I mean, this is just an illustrative thing कि beginning में, year के beginning में the requirement under the Companies Act that management, I mean the KMPs are required to give disclosure or the declaration to the board that they are the directors or holding key position or shareholding
in which kind of entities and who are their relatives, etc. तो वो पूरी लिस्ट एक दी जाती है. We can rely on that because that's a declaration given by the respective KMPs. We are not going to do investigation. So we can rely on that, and ultimately that is being considered on record by the board of directors. So we can fetch that data. हम लोग को information मांग सकते हैं, उससे हमारा pool bank ready हो जाएगा कि basically क्या आ रहा है. Then डायरेक्टर्स के अलावा KMPs का भी हम डिक्लेरेशन मांग सकते हैं, बिकॉज KMPs में फॉर एग्जांपल अंडर Ind AS CFO इज अ KMP और कंपनी सेक्रेटरी इज अ KMP. तो इन नॉर्मल सिनेरियो दे आर नॉट गिविंग दैट काइंड ऑफ डिक्लेरेशन. सो वी कैन सीक दोज काइंड ऑफ डिक्लेरेशन बिकॉज वो आपको Ind AS के पर्सपेक्टिव से भी ज़रूरी होगा फॉर आइडेंटिफाइंग द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स थ्रू ऑडिट कमेटी और बोर्ड मिनट्स. सो ऑडिट कमेटी या बोर्ड में कुछ दिख रहा है क्या, ये लेजर अकाउंट्स में काफ़ी बार नाम सिमिलर होता है, तो इस तरह के आप देख सकते हैं. कुछ केसेस में बहुत ही थिन लाइन होती है, बॉर्डर लाइन होता है, वहाँ पे इवैल्यूएशन की नीड होती है whether it's a related party or not. So there may be a conscious decision taken by the company that there is not a related party, but one will have to evaluate. और जब ये एग्जामिन करते हैं तो वो नहीं है जहाँ हमें लग रहा है कि ये ग्रे एरिया है, बट अल्टीमेटली कंक्लूड करते नहीं है. इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल दैट वी डॉक्यूमेंट इट एज अ पार्ट ऑफ वर्क पेपर कि हमने ये पार्टी को आइडेंटिफाई किया, बट बेस्ड ऑन द डिस्कशन विद द मैनेजमेंट ऑन ABC क्राइटेरिया it has been concluded that this is not a related party. This will help you whenever a regulator comes for a review. So regulator can be NAFRA in case of listed entity. In case of unlisted entity, it can be QRB. Because जो NAFRA कर रहा है वो QRB नहीं कर रहा है, तो QRB सारी unlisted entities को कर रहा है. Peer review process में it can be examined. So from various perspective, and nowadays it's very clear कि जब आप करते हैं तभी आप डॉक्यूमेंट करिए. ऐसा नहीं कि जब कोई रिव्यूअर आएगा आपसे पूछेगा तब आप बोलेंगे नहीं ये तो मैंने सोचा था, मैं अभी लिख के आपको बताता हूँ, देता हूँ. इट कैन नॉट हैपन लाइक दिस. सो ये आपको उसी वक्त डॉक्यूमेंट करना है, एंड इट विल ऑलवेज बी यूजफुल फॉर यू फॉर एनी फ्यूचर लिटिगेशंस व्हिच कैन क्रॉप अप. Reporting for the purpose of section 188 what we discussed, arms length evaluation, transfer pricing. So transfer pricing वगैरह से भी आप arms length evaluate कर सकते हैं जो हमने डिस्कस किया था. ऐसे 550 related party which we have discussed. Some of the procedures which are specified in SA 550 is like information which is supplied by the entity to regulatory authorities. काफ़ी बार होता है रेगुलेटरी अथॉरिटी को देना पड़ता है. फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट कंपनीज में देना पड़ता है कि रेरा को देना पड़ता है कि उनके प्रमोटर्स कौन हैं. NBFCs में देना पड़ता है, उनके काफ़ी फॉर्म्स फाइल होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं एनुअली, जहाँ पे रिलेटेड पार्टी के डिस्क्रिप्शन देने पड़ते हैं. इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी रिक्वायरमेंट है कि आपको हाफ ईयरली बेस पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन देने हैं. एज एन ऑडिटर आप उसको रिव्यू नहीं करते हैं बिकॉज इट्स नॉट इन योर स्कोप ड्यूरिंग रिव्यू, बट दैट कैन अगेन बी हैंडी जब आप इंटीरिम प्लान कर रहे हैं समवेयर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे दी तो मैनेजमेंट ने उतना तो आइडेंटिफाई कर लिया है. फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई कर लिया कि 80 ट्रांजेक्शन्स हैं, ये मेरी 15 पार्टीज़ हैं, उतना तो मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है. आपको अब ये देखना है उसके बियॉन्ड देखना है कि उसके बियॉन्ड तो कुछ नहीं है, जो मैनेजमेंट ने बता दिया वो तो आ गया. हो सकता है उसमें से शायद कुछ फॉल ना करे, वो एक अलग बात है, वो आप निकाल सकते हैं, बट उसके बियॉन्ड देखना है वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो दिखाया है वो रिपोर्ट करना है वो नेसेसरी नहीं है. यू हैव टू सी समथिंग विच इज़ नॉट देयर एंड व्हाट डिस्क्लोज वेदर इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज और नॉट. तो आप वहाँ से इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हैं. तो जैसे इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द एंटिटी टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, शेयर होल्डर्स रजिस्टर, तो जैसे ऑडिट कमेटी में अप्रूव होते हैं तो आपको रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में डिटेल मेंटेन करनी पड़ती है. तो आप ये देख सकते हैं कि रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में किया है कि नहीं किया है. कभी कभी होता है कि कोई ट्रांजेक्शन अभी नहीं है, पहले का है. नो डाउट अभी एवरी ईयर अप्रूवल लेने की नीड है, ओमनिबस अप्रूवल की नीड है, बट देयर वाज सम एग्जम्पशन इन द पास्ट कि अगर आपने पहले से लिया हुआ है, काफ़ी लेंथ के लिए लिया हुआ है, तो देयर इज नो नीड टू टेक अ ओमनिबस अप्रूवल फॉर दैट ट्रांजेक्शन, बट रेटिफिकेशन की नीड है. तो आपको वहाँ से भी पता चलेगा कि रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है कि नहीं किया है. सो बोर्ड नोटिंग ये हो गया, ऑडिट कमेटी का नोटिंग ये हो गया, रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक नोटिंग हो गया. कभी कभी हो सकता है रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया हुआ बट ऑडिट कमेटी की नोटिंग में नहीं है. मे बी वाइस वर्सा ऑडिट कमेटी में बट रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है. तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए हैंडी हो सकती है. स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस, कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट्स विद KMP, अगर कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हुए तो वो एवेल्यूएट किए जा सकते हैं. Significant contracts and agreements not in the entities of ordinary course of business what we discussed. Internal auditors report, documents associated with the entities filing with the securities regulator, prospectus which I discussed. कि अगर कोई कंपनी लिस्ट होने जा रही है, सो इक्विटी लिस्टिंग हो रही है तो प्रॉस्पेक्टस में काफ़ी डिटेल में दिया जाता है, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन फेच कर सकते हैं. अनलिस्टेड एंटिटी है, DRHP के लिए मान लो कि डेट लिस्ट करवा रही है,
वहाँ से आप कर सकते हैं. राइट इशू हो रहा है, सो इवन तो कंपनी लिस्टेड है बट राइट इशू हो रही है, उसको डॉक्यूमेंट फाइल करना है, तो डॉक्यूमेंट के टाइम पे फिर से वैल्यूएट करेगा. सो काफ़ी बार क्या होता है, आप ऑडिटर के तौर पे काम करते हैं, कभी कभी आपके पास एक्सेस लिमिटेड होता है, बट जब वहाँ पे मर्चेंट बैंकर है, लॉयर काम करते हैं, उनको ज़्यादा एक्सेस होता है, दे कैन फेच सम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन और वो आरपीटी में आ जाता है. तो जब वो वहाँ आ जाता है तो आप वहाँ से विजिलेंटली वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हैं आप अपने इवेल्यूएशन के लिए. Then arrangements that may indicate the existence of previously unidentified what we discussed, and then at last written representation. आप कितना भी प्रोसेस कर लें, कुछ भी कर लें, it's always advisable to seek a written representation and to document it from the safety perspective. And there is a separate auditing standard dealing with that. So one should take that and document it as a part of their record. ये स्लाइड में मैंने ब्रीफली डिस्क्राइब किया है मेरी तरफ से. आई मीन वन कैन इवेल्यूएट कि उसको क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है. I thought this would be a very useful work paper if someone document it from the perspective of RPT. So for example, जब आप एक कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं तो ऑलवेज एडवाइजेबल है कि आप पहले लिस्ट लेके बैठिए कि कौन सी पार्टीज हैं जो रिलेटेड पार्टी में फॉल कर रही हैं. आपने आइडेंटिफाई किया, बेटर है आप एक कंप्लीट ट्रैकर बना लीजिए. सो मे भी हो सकता है कि लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, तो लिस्टेड कंपनी में आपको रिलेटेड पार्टी एज पर इंडेक्स लगेगा, एज पर LODR लगेगा, एज पर कंपनीज एक्ट लगेगा, ठीक है. तो ये इन्फॉर्मेशन आप प्लॉट कर सकते हैं कि ये पार्टी कंपनीज एक्ट में फॉल कर रही है. हो सकता है कि आपके पास 25 पार्टीज आइडेंटिफाइड हैं, 25 में से 20 कंपनीज एक्ट में फॉल कर रही होंगी. हो सकता है LODR में 27 आ जाए, 7 दूसरी कोई और आ जाए, 5 वहाँ से निकल जाए. हो सकता है इंडेक्स में 30 आ जाए, 24 आ जाए. तो आपके पास पूरा एक यूनिवर्स हो जाएगा. यूनिवर्स होना ज़रूरी है. फिर इनकम टैक्स एक्ट के एंगल से मे भी आप हो सकता है उस कंपनी के टैक्स ऑडिटर ना हो, बट आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देख सकते हैं अगर उसको एप्लीकेबल है कि वहाँ पे क्या रिलेटेड पार्टीज हैं. तो ये अगर आप ट्रैकर बनाते हैं तो आपके पास एक पूरा एक कंप्लीट ग्रिप होगा कि कौन सी पार्टीज किस में है. सो 80-90% एंटिटीज कॉमन होंगी, बट 10% होगी जहाँ पे डेविएशन होगा. वहाँ थोड़ा सा आपको क्रिटिकली इवेल्युएट करना चाहिए कि ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है. कंपनीज एक्ट में अप्रूवल की नीड है, LODR में नीड है, डिस्क्लोजर की नीड है, नहीं है. तो ये जब अगर आप एक ट्रैकर बनाते हैं और ईयर के बिगनिंग में, एंड दिस विल हेल्प यू फॉर योर फ्यूचर पीरियड ऑफ ऑडिट. क्योंकि जैसे अब अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर है तो 5 साल के लिए अपॉइंट हो जाते हैं, अगर आप टैक्स ऑडिटर है तो एवरी ईयर होता है. सो अगर आपने एक बार आपका मास्टर डॉक्यूमेंट बना लिया पास परमानेंट फाइल के एंगल से, तो आपको एवरी ईयर उसको अपग्रेड करना है. तो दिस विल बी अ क्वाइट हैंडी काइंड ऑफ ट्रैकर विच विल बी यूजफुल फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन पर्सपेक्टिव. सो आप यहाँ पार्टीज के नाम डिस्क्राइब कर सकते हैं, रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर सकते हैं, और यहाँ एक और कॉलम डाल सकते हैं सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन कि ये सोर्स आपको कहाँ से मिला. ये MBP 1 से मिला, प्रॉस्पेक्टस से मिला, कहीं और डोमेन से मिला, तो वो भी आप कर सकते हैं. तो आपका जो प्रोसीजर है और आइडेंटिफिकेशन है वो कम्प्लीटली एक पर्टिकुलर ट्रैकर के अंदर डॉक्यूमेंट हो जाएगा. Ratification of related party transactions. So this was discussed earlier. So ratification I have just touched upon. So now till time we have covered everything from the perspective of the requirement of auditing standards. Now we will cover something from the perspective of accounting standards or LODR guidelines. Yeah. So in that ratification, and this one question, ratification. Suppose throughout there that omnibus approval something not taken, this board or company was observing that this party is not related party. During audit we find it is a related party. So it is already year end happened. So can they ratify that transaction which is done throughout the year in the account approval meeting, this board meeting, this whatever is, this is not a listed company, a small private limited company or like that. So first of all, I mean, presuming if IFC is applicable, or maybe if IFC is not applicable, I take 2 scenarios. If IFC is applicable, then it will raise question mark on the IFC process, that how is it possible. So again, one will have to dig deeper, and whether it was a genuine error or it was an oversight or what was that. So one will have to look from that perspective. If IFC is not applicable, one will again have to look into from the perspective of materiality, कि वो ट्रांजेक्शन मटेरियल था नहीं था. अगर मटेरियल था तो इट मे बी अ पॉसिबिलिटी कि किसी ने इंटेंशनली उसको हाइड करने की कोशिश की हो या ऐसा कुछ हो. तो दैट हैज टू बी सीन. बट देन अंडर दैट, सो लाइक फॉर एग्जांपल हियर आई हैव डेबिटेड कि मान लो जैसे आपका एग्जांपल है कंपनीज एक्ट में है, लिस्टेड नहीं है, तो कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा. सो वहाँ पे लिखा है कि अगर ऑडिट कमेटी है तो अप टू 1 करोड़ इट कैन बी रेटिफाइड विद इन 3 मंथ्स. तो अगर 1 करोड़ के अंदर तक का ट्रांजेक्शन है, 3 महीने के अंदर अंदर आप रेटिफाई कर सकते हैं. बट सपोज आपको 6 महीने बाद पता चला या ईयर एंड पे पता चला ऑडिट प्रोसेस पे, इट्स अ ब्रीच, इट्स अ वायलेशन ऑफ कंपनीज एक्ट.
देखिए जो भी होगा उसके कंसिक्वेंसेस होंगे, बट आपको जब भी पता चला, इट्स ऑलवेज बेटर जब जागे तब सवेरा। ऐसा नहीं है कि आपने उसको कम्प्लीटली मिस कर दिया या कोई आपके ऊपर फिंगर रेज करता है उसके बाद आप उसका कॉग्निजेंस देते हैं। आपको पता चल गया, आपने उसको कंसिडरेशन में ले लिया, इट्स ऑलवेज गुड। बट जो लैप्स हुआ उसको रेक्टिफाई करना रहेगा। तो कंपनीज एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, बट स्टिल इट इज़ एडवाइजेबल, आप रेक्टिफाई करवा लीजिए। अगर कुछ पेनल्टी आएगी, मिनिमल आएगी या कुछ भी आता है तो जो आएगा वो आएगा प्रोसीजर पार्ट में। ऑडिट रिपोर्ट में कुछ आएगा? ऑडिट रिपोर्ट में नहीं आएगा, बिकॉज अप्रूवल तो हो गया, अप्रूवल हो गया। सो ऑडिट रिपोर्ट में देखिए ट्रू एंड फेयर में तो आपको कहीं रिपोर्ट नहीं करना है, बिकॉज वहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात आती है कारों की, तो कारों में कहा गया है कि वो आपका अप्रूवल लिया है कि नहीं लिया है। सो सपोज अगर फॉर एग्जांपल 188 में कहा गया है, अब 188 में क्या कहा गया है कि अगर आपको टाइमली अप्रूवल लेना है या प्रायर अप्रूवल लेना है और अगर नहीं लिया है तो फिर आप कारों में वहाँ लिख सकते हैं कि भाई ये नहीं लिया गया था, however before the end of the year or subsequent to the end of the year the approvals have been obtained. So it will end on a positive note कि भाई लैप्स था बट ये लैप्स रेक्टिफाई हो गया। सो नोटिफिकेशन में जैसे ऑडिट कमेटी के बारे में बताया कि कब तक ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, बोर्ड से 3 महीने में ले सकते हैं, शेयरहोल्डर से 3 महीने में ले सकते हैं। एलओडीआर में क्लियर कट नो है, वहाँ पे कोई रेटिफिकेशन की पॉसिबिलिटी नहीं दी है सेबी ने। सो अगर लिस्टेड कंपनी है तो फिर आपको कंजर्वेटिवली ये लेके चलना पड़ेगा, अनलिस्टेड है तो आप यहाँ पे टेक शेल्टर कर सकते हैं। ओमनिबस अप्रूवल, सो ओमनिबस अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है कंपनीज एक्ट में, एलओडीआर में, दोनों में है। सो ओमनिबस अप्रूवल होता क्या है? ओमनिबस अप्रूवल ये होता है वेन मैनेजमेंट एस्टिमेट्स एंड एक्सपेक्ट कि मुझे ये ट्रांजेक्शन करने हैं, फ्रीक्वेंटली करने हैं या मे बी वंस इन अ वाइल करना है पूरे साल में। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सितंबर में करूँगा, दिसंबर में करूँगा, जो भी है। तो बेटर है, नॉर्मली कंपनीज क्या करती हैं कि ईयर के बिगनिंग में, फर्स्ट ऑडिट नॉर्मली ईयर के बिगनिंग में, यानी कि मार्च एंड होने के पहले ही वो अप्रूवल ले लेते हैं फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। क्योंकि अगर मान लो मार्च के बाद लेंगे, सपोज अनलिस्टेड कंपनी है और उसका बोर्ड मीटिंग या ऑडिट कमेटी जून जुलाई में होगा, तो 3 महीने में ट्रांजेक्शन कैसे करेगा? या अगर लिस्टेड है मई में होगा तो 2 महीने में ट्रांजेक्शन कैसे करेगा? तो नॉर्मली पीपल टेक अप्रूवल इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी और मार्च एज अ पार्ट ऑफ ओमनिबस अप्रूवल। वो ले लेते हैं जो ट्रांजेक्शन रिकरिंग नेचर के हैं, जो भी हैं, with a higher approval. So there are different norms, different requirements with regard to omnibus approval under Companies Act and LODR. So these all are depicted here. So the validity is of 1 financial year and the review period is as made in fit. Whereas in LODR it is 1 year and quarterly it is required to be reviewed. And the key parameters which are required to be considered during omnibus approval is that name of related party का नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ब्लैंकेट अप्रूवल ले लिया कि मैं मेरे रिलेटेड पार्टीज़ के साथ 100 करोड़ का ट्रांजेक्शन करूँगा ड्यूरिंग द ईयर, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। आप किसके साथ करेंगे, क्या करेंगे, क्या नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन होगा, क्या वैल्यू होगा, मैक्सिमम कितना होगा, आर्म्स लेंथ पे है नहीं, ये सारे पैरामीटर्स आपको वो रिजोल्यूशन पे रिकॉर्ड करना है, नोट करना है जब आप ऑडिट कमेटी के पास जाते हैं अप्रूवल के लिए। कंपनी स्टेटस एंड एप्लीकेबल प्रोविजन, सो अगेन आई मीन इफ यू सी कि कौन से प्रोविजन किसको एप्लीकेबल है, हमने काफ़ी बातें की है कि कंपनीज एक्ट किसको एप्लीकेबल है, कौन सा वो प्रोविजन किसको एप्लीकेबल है, एलओडीआर किसको एप्लीकेबल है। सो फॉर एग्जांपल इफ अ कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी एंड अ लिस्टेड कंपनी इज देयर, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी तो लिस्टेड है बट बहुत छोटी कंपनी है, उसकी नेटवर्थ ही नहीं है या उसकी पेडअप कैपिटल ही नहीं है, तो लिस्ट हो गई कभी किसी ज़माने में, आज भी लिस्टेड के तौर पे चल रही है, या मतलब एकदम डीलिस के है, एच पे है, इस तरह की है, तो लिस्टेड है बट उसकी पेडअप कैपिटल इज लेस देन 10 करोड़ और नेटवर्थ एंड इट सेज एंड नेटवर्थ ऑफ लेस देन 25 करोड़। सो पेडअप कैपिटल इज लेस देन 10 करोड़, नेटवर्थ इज लेस देन 25 करोड़। तो उस केस में एलओडीआर का जो क्लॉज 23 है वो एप्लीकेबल नहीं है, बट कंपनीज एक्ट का सेक्शन 177, 188 विल बी एप्लीकेबल। एंड एलओडीआर में 23 के अंदर एजम्पशंस हैं जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस की हैं, बट 34A शेड्यूल 5 के रिलेटेड जो डिस्क्लोजर्स हैं वो आपको एप्लीकेबल रहेंगे। आपकी एसएमई लिस्टेड कंपनी है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर कोई कंपनी है जिसको अकाउंटिंग साइड एप्लीकेबल है बिकॉज एसएमई है और वो लिस्टेड है, तो उसमें भी सेम यही सारे पैरामीटर्स होंगे। अगर कोई लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो आपको कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजन एप्लीकेबल हैं, एलओडीआर टोटलिटी में एप्लीकेबल है। आपकी अगर एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है एंड पेड अप कैपिटल इज ऑफ ₹10 करोड़ और मोर, यहाँ पे और है, और टर्नओवर ऑफ ₹100 करोड़ और मोर और, सो ये तीनों पैरामीटर्स में आइदर और दिस और दिस और दिस, अगर ये तीनों पैरामीटर फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो आपको सिर्फ 177, 188 एप्लीकेबल होगा, और बाकी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, तो वहाँ सिर्फ 188 एप्लीकेबल होगा। ये अप्रूवल प्रोसीजर है, अप्रूवल मैकेनिज्म की, आपको अप्रूवल कैसे लेना है, क्या लेना है। तो अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी,
is required under the provision of Companies Act, what we discussed, omnibus approval की need है. RPT transaction under 188 specifically requires approval of board of directors. कुछ शेयरहोल्डर्स के रिलेटेड अप्रूवल लगेंगे जो ट्रांजेक्शन्स जो स्पेसिफाइड पैरामीटर्स के अबव जाते हैं. तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे लिस्ट किए हैं. आई विल नॉट गो इनटू डिटेल विद रिगार्ड टू दीज ट्रांजेक्शन्स. देन कंप्लायंस अंडर LODR. तो अंडर LODR इट सेज एडिशनली कि ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लेना है तो प्रायर अप्रूवल लेना है. देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल लेना है जहाँ नीड है. शेयरहोल्डर्स का अप्रूवल लेना है विद रिगार्ड टू मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स. तो कंपनी को अपनी मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स की एक पॉलिसी प्रिस्क्राइब करनी है, उसको अपलोड करना है. तो ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पे दिए गए हैं. एग्जम्पशंस दिए गए हैं कुछ, जैसे गवर्नमेंट कंपनी के बारे में हमने डिस्कस किया था, या अगर एक होली ओन सब्सिडी है होल्डिंग कंपनी की तो देयर आर सर्टेन एग्जम्पशंस अंडर कंपनीज एक्ट और LODR फॉर नॉट सीकिंग अप्रूवल. ये अप्रूवल मैकेनिज्म का कंपेरिजन है, मोर और लेस सिमिलर है. सो थोड़ा सा डिफरेंस है. फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट में रिक्वायर्ड टू अप्रूव ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस. LODR में रिक्वायरमेंट है प्रायर अप्रूवल की. सो प्रायर अप्रूवल है तो ओमनिबस अप्रूवल आ जाता है. कंपनीज एक्ट में अप्रूवल की नीड है, आप करने के पहले या उस वक्त लेते हैं तो बेटर है कि आप ओमनिबस ले लें. तो एक तरह से ये पूरा हार्मोनियस अप्रोच है. विच एवर इज मोर कंजर्वेटिव आपको उसके साथ चलना है, आप उसको अलग अलग वे में नहीं ले सकते हैं. सम ऑफ द की एस्पेक्ट्स ऑफ सेबी LODR जो मुझे लगा काफ़ी बेनिफिशियल होगा और काफ़ी लोगों को नहीं मालूम होगा. सो सेबी LODR में एक क्लॉज ऐसा है जो अभी तक हमने आज समझा होगा. फॉर एग्जांपल कि आई विल गिव एन एग्जांपल हाइपोथेटिकली कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 2 सब्सिडी है. फॉर एग्जांपल PVR है और IMAX है. फॉर एग्जांपल दीज आर 2 कंपनीज बॉडी कॉर्पोरेट एंड दीज आर द 2 सब्सिडीज. अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर PVR के साथ ट्रांजेक्शन है तो डेफिनेटली रिलायंस और PVR के ऑडिट कमेटी बोर्ड में उसका अप्रूवल लगेगा. रिलायंस और IMAX के बीच में ट्रांजेक्शन है तो दोनों का लगेगा. बट अगर PVR और IMAX के बीच का ट्रांजेक्शन है तो क्या रिलायंस की ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लगेगा? आई मीन नॉर्मल वे में तो हम ये सोचेंगे कि कहाँ नीड है, मैं तो कहीं इन्वॉल्व ही नहीं हूँ, मैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज हूँ, मुझे क्या करना है, मेरी सब्सिडी का हुआ है, एक मेरी PVR है और एक मेरी IMAX है. सो दोनों मेरी सब्सिडीज है तो उनके बीच हो रहा है, उनका बोर्ड ऑडिट कमेटी देखेगा. बट नहीं, यहाँ पे सेबी LODR कहता है कि अगर सब्सिडी इफ यू आर सब्सिडी ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी, ठीक है, बट लिस्टेड एंटिटी इज नॉट अ पार्ट. जैसे कि अगर मैं पार्ट नहीं हूँ, अगर मैं रिलायंस हूँ, इवन देन अ प्रायर अप्रूवल रिलायंस विल बी नीडेड इफ द वैल्यू ऑफ सच ट्रांजेक्शन वेदर एंटर्ड इनटू इंडिविजुअली और टेकन टुगेदर विद द प्रीवियस ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर exceeds 10% of annual consolidated turnover. So Reliance Industries का जो consol turnover होगा, presuming कि last year का उसका consol turnover होगा hypothetically 20,000 crore for example, तो 10% will be 2,000 crore. और अगर ये transaction हुआ है between IMAX and PVR which is of 2,100 crore, तो उस केस में Reliance Industries की audit committee का approval लेना भी mandatory है. और as an auditor ये responsibility आपके ऊपर रहेगी. सो आपके ऊपर कब रहेगी? सपोज आप IMAX के ऑडिटर हैं या आप PVR के ऑडिटर हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर कास्टेड है. आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने तो मेरा देख लिया था, मुझे पता था, यहाँ ले लिया वहाँ ले लिया, मुझे क्या करना है. नो, देन इट इज़ नॉट विद इन दी फ्रेमवर्क और गाइडलाइन ऑफ LODR, इट विल बी ब्रीच ऑफ दैट. तो आपको वो देखना है कि वो कंसोल जो पेरेंट कंपनी का है उसके 10% के टर्नओवर के क्राइटेरिया के ऊपर अगर ये जा रहा है तो आपको अप्रूवल लेना है और कंपनी ने लिया है नहीं लिया है. ऐसा देखा गया है कि काफ़ी बार कंपनीज मिस कर देती हैं, उनको ध्यान में नहीं आ रहा है, विच इज़ अ सीरियस थिंग. सिमिलर वे 1 अप्रैल 23 से यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर से सेबी ने इसको फर्दर एनहेंस किया है, स्ट्रिंजेंट किया है. सो ये तो था ही था. सेबी ने कहा कि अगर आपका 10% ऑफ द एनुअल टर्नओवर होता है एज पर द लास्ट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडी. अब जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल IMAX हो गई और PVR हो गई. PVR का टर्नओवर 1000 करोड़ है, IMAX का टर्नओवर 400 करोड़ है. 400 करोड़ है उसका टर्नओवर, 10% इज 40 करोड़. अब मान लो कि 45 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ है, इवन दो PVR के एंगल से एप्लीकेबल नहीं है, रिलायंस के एंगल से नहीं है, बट स्टिल रिलायंस की ऑडिट कमेटी से अप्रूवल लेना है, क्योंकि ये कहता है कि लिस्टेड कंपनी की ऑडिट कमेटी से अप्रूवल लेना कंपलसरी है. तो ये और भी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो गया. एक तो मेरा कंसोल टर्नओवर था, उसमें तो काफ़ी हायर रिक्वायरमेंट थी. अब जब मैं स्टैंड अलोन एंटिटी के एंगल से देखता हूँ और एक एंटिटी मेरी छोटी है और एक बड़ी है, तो मेरे को दोनों के एंगल से देखना पड़ेगा और उस एंगल से देखना पड़ेगा, मेरे को तीनों का कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा.
पीवीआर का टर्नओवर, एमएक्स का टर्नओवर, रिलायंस इंडस्ट्रीज का, रिलायंस इंडस्ट्रीज का कॉन्सो लेवल पे, पीवीआर और एमएक्स का स्टैंडअलोन पे, और उस एंगल से अगर 10% का थ्रेशोल्ड ब्रीच होता है एज पर द लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट विल रिक्वायर अप्रूवल ऑफ द ऑडिट कमेटी ऑफ द लिस्टेड कंपनी. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए. Sorry, in case the other company, the subsidiary also is a listed entity. नीचे है ये पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ. सो प्रायर अप्रूवल ऑफ द ऑडिट कमेटी ऑफ द लिस्टेड एंटिटी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन टू विच द लिस्टेड सब्सिडरी इज अ पार्टी बट द लिस्टेड एंटिटी इज नॉट अ पार्टी. सो ये जो आप बात कर रहे हैं कि अगर मान लो कि होता है बहुत से केसेस में कि पेरेंट कंपनी लिस्टेड है, सब्सिडी भी लिस्टेड है. आपको मालूम होगा लिस्टेड में भी अलग अलग डेफिनेशन है, सिक्योरिटीज लिस्ट होनी चाहिए. सो हो सकता है पेरेंट इक्विटी लिस्टेड है, सब्सिडी डायरेक्टली लिस्टेड है. तो सब्सिडी इक्विटी लिस्टेड नहीं है फिर भी लिस्टेड कही जाएगी. अगर सब्सिडी लिस्टेड है तो फिर ये पैरामीटर्स एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर उसको सेबी एडोडीआर की जो गाइडलाइन है वो देखना पड़ेगा. फिर आपको सब्सिडी के नीचे भी अगर कोई दो सब्सिडीज हैं तो वो देखना पड़ेगा और सेम प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे. कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं बिटवीन होल्डिंग सब्सिडरी, ये यहाँ पे डिस्क्राइब किया, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लूँगा. सो वी आर ऑन टाइम. सो like 188 will not apply in respect to private companies, or approval of shareholders will be required. All these things are specified here. Some of the key points which are required to be considered or which should be considered. Normally हम लोग सोचते हैं शेयर होल्डर है तो रिलेटेड पार्टी हो गई, बाय डिफॉल्ट रिलेटेड पार्टी होगा. बट आप एक चीज़ देखिए कि कंपनीज एक्ट में शेयर होल्डर इज नॉट कंसिडर्ड एज अ रिलेटेड पार्टी. सो काफ़ी बार होता है कि प्राइवेट कंपनीज में, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज में जो शेयर होल्डर होता है, जो प्रमोटर होता है, वो 100% ओन करता है, बट वो कंपनी के बोर्ड पे ही नहीं है. कंपनी के बोर्ड पे ही नहीं है तो कंपनीज एक्ट के अंदर वो रिलेटेड पार्टी नहीं है. बिकॉज कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर कहा गया है, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर कहा गया है, फलाना फलाना. शेयर होल्डर को नहीं कहा गया. वो फिर आपको AS 18 के एंगल से देखना पड़ेगा, कंट्रोल के एंगल से, इन्फ्लुएंस के एंगल से. तो ये मेजर चीज़ है जो लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल नोशन होता है कि अरे शेयर होल्डर है, सिग्निफिकेंट होल्डर है तो कन्फ्लो हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया तो रिलेटेड पार्टी है. बट वो उस एंगल से नहीं आता है. सेम वे रिलेटिव और मेजर शेयर होल्डर आर नॉट रिलेटेड पार्टी अंडर कंपनीज एक्ट प्रोविजन. As per AS 18, relative means spouse, son, daughter, brother, sister, father, mother, etc. Under the Companies Act, son's wife or daughter's husband are also relatives. Under Ind AS, live-in relationships are also considered as a part of related parties. So all these things will be important. Key points to consider: transactions with nil consideration. This is important. काफ़ी बार होता है, हमने देखा होगा कि मेरी ये ऑफिस है, इस ऑफिस को मैंने रजिस्टर्ड ऑफिस बनाया है और बाहर मैंने बोर्ड लगा दिया, मेरी ग्रुप में 10 एंटिटीज़ और हैं और मैंने ROC में सब जगह कहा है कि ये मेरी रजिस्टर्ड ऑफिस है. ये कंपनी A लिमिटेड ओन कर दी ये प्रीमाइसेस, मेरी एंटिटीज़ हैं B, C, D, E, F, G, जितनी भी लिमिटेड एंटिटीज़ हैं उसको भी मैंने बता दिया कि यहाँ से मैं ऑपरेट कर रहा हूँ और ये ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है, सब जगह मैंने ROC में भी कम्युनिकेट किया हुआ है. तो ये देखा गया है कि इसको हम लोग रिलेटेड पार्टी में दिखाते ही नहीं है. क्यों नहीं दिखाते, क्यों नहीं करते? अरे मैंने तो कुछ चार्ज ही नहीं किया. बराबर है, आपने चार्ज नहीं किया. बट रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन क्या है अंडर AS और Ind AS? इट सेज ट्रांजेक्शन कैरिड आउट विद और विदाउट एनी मॉनेटरी कंसिडरेशन. सो देयर इज अ ट्रांजेक्शन विच इज कैरिड आउट. सो ट्रांजेक्शन कैन बी ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज और ऑब्लिगेशन. तो अल्टीमेटली आपने शेयरिंग और ट्रांसफरिंग ऑफ रिसोर्स किया है, आपने प्रीमाइसेस में इतना सा पोर्शन कार्व आउट किया है B लिमिटेड के लिए, इतना सा C के लिए. इट्स अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन. ये दिखाना पड़ेगा आपको आपके एनुअल अकाउंट्स के अंदर ट्रांजेक्शन्स फॉर नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन करके. क्लाइंट्स का रिजर्वेशन आता है, वो बोलेगा नहीं मुझे इनकम टैक्स में प्रॉब्लम हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, सब बात बराबर है. यू कांट टेक एक्सक्यूज, यू कांट टेक शेल्टर. सो सबसे पहले तो ये आर्म्स लेंथ पे नहीं है, पहले तो आपको वही क्वेश्चन करना चाहिए कि वो से तो ट्रांजेक्शन ही आपका आर्म्स लेंथ पे नहीं, आपने कैसे किया. इट्स अ वायलेशन इफ इट इज फॉलिंग अंडर द पैरामीटर्स ऑफ सीकिंग अप्रूवल अंडर 188 और वॉट एवर द केस में भी. और अगर वो नहीं लिया है, वो नहीं किया है और उसके बाद डिस्क्लोजर भी नहीं किया है, इट्स अ कंप्लीट ब्रीच. सो ये बेसिक चीज़ें हैं जो ध्यान में होनी चाहिए विजिलेंट के लिए. काफ़ी बार होता है, हमने देखा एक ही बंदा कंपनी का है जो A के लिए भी काम कर रहा है, B के लिए भी कर रहा है. वो ग्रुप CFO होगा या CFO होगा, सैलरी एक से ले रहा है बट उसका कॉस्टिंग सब में जा रहा है, बट शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो रहा. सो देन इट इज नॉट एन आर्म्स लेंथ. तो ये सारे पैरामीटर्स इवेल्युएट करने चाहिए, आपको देखने चाहिए. सो दिस इज वन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि चाहे ट्रांजेक्शन में कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन का एलिमेंट इन्वॉल्व है या नहीं है,
आपको आरपीटी के लिए कंसिडर करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर के लिए लेना पड़ेगा, यू कांट एस्केप दैट। कॉमन डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ईएस में नहीं होते हैं, इंडेस में होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स सेम वे में होते हैं, तो ये हो गया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको अप्रूवल किसका लेना है जब हम बात करते हैं ऑडिट कमेटी मेंबर्स का, राइट? तो ऑडिट कमेटी मेंबर्स का आपने अप्रूवल ले लिया, आपका काम हो गया? नहीं, सो फॉर एग्जांपल ऑडिट कमेटी का लेना है। अगर एक कंपनी के अंदर मैं एक लिस्टेड कंपनी की बात करता हूँ, ऑडिट कमेटी है, और ऑडिट कमेटी का जो कंपोजिशन है वो इस तरह से है कि उसमें 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और 2 नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, मतलब 2 मान लो कि जो भी एग्जीक्यूटिव या इस तरह के हैं, ठीक है? तो 5 डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, और एक ट्रांजेक्शन हुआ तो ऑडिट कमेटी में अप्रूव कर लिया, तो विल दैट बी फाइन? आप मूव एड कर सकते हैं, राइट? या नहीं कर सकते हैं? आप स्क्रीन पे मत देखिए, पढ़िए नहीं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, काफ़ी लोगों को आज भी नहीं मालूम है, लोग इसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करते हैं। इफ इट्स अ लिस्टेड कंपनी, सेबी एलओडीआर एप्लीकेबल हो रहा है, तो सेबी ने कहा है कि ऑडिट कमेटी में सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को अप्रूव करेंगे। नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कैन नॉट अप्रूव रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन वेदर और नॉट दे आर पार्टी टू दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन और नॉट, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। सो अगर ऑडिट कमेटी में 5 डायरेक्टर हैं, 2 directors cannot participate in the decision making of that particular transaction, they have to abstain from that. Normally देखा गया है, मिनट्स में रेजोल्यूशन में लिखा था क्या, ऑडिट कमेटी has approved the related party transaction। अरे ऑडिट कमेटी कैसे कर सकता है? there is a clear cut violation, breach है। ऑडिट कमेटी में खाली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ही अप्रूव कर सकते हैं, आपने सीबी एलओडीआर की गाइडलाइन वायलेट कर दी, और ये अमेंडमेंट आया है लास्ट ईयर से, लोगों को मालूम ही नहीं है इसके बारे में। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, वन इज टू बी विजिलेंट। ट्रांजेक्शन 2 एसोसिएट के बीच में तो आरपीडी में फॉल नहीं करता है, डिविडेंड वगैरह दिया है, गारंटी, वारंटी एक्सेट्रा, दिस विल बी आरपीडी। 10% तो आपका डिस्क्लोजर टोटली दिखाना है, इंडिविजुअली दिखाना है, उसके लिए है। रिलेशनशिप देना ज़रूरी है, कंट्रोल है तो देना ज़रूरी है रिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रांजेक्शन। कंप्लीट चेन का कंट्रोल देना है, सो जैसे मैंने बताया कि अगर ए की बी सब्सिडी बी की सी है, तो सी की बी और ए बी कंट्रोलिंग एंटिटी हुई तो आपको उसका डिस्क्लोजर देना है, इवन दो ट्रांजेक्शन नहीं है। ट्रस्ट फाउंडेशन हैं जैसे सीएसआर के होते हैं, इस तरह के होते हैं, तो वो सारे भी आरपीटी में आ जाएंगे। ग्रेचुटी प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट भी आ जाएंगे, डिस्क्लोजर ऑफ ग्रेचुटी लीव एनकैशमेंट एक्चुअली एन्युटी। अगर मान लो कि काफ़ी बार होता है डायरेक्टर का हमने ग्रेचुटी डिटरमाइन करते हैं, ग्रुप ग्रेचुटी होता है, अभी कंपनी के तो सारे एम्प्लॉयज़ का एक साथ आता है, कंपनी का अलग अलग तो आता नहीं है कि डायरेक्टर्स का अलग ग्रेचुटी डिटरमाइन किया या लीव एनकैशमेंट किया और बाकी सबका अलग किया, तो उस केस में आप आरपीटी कैसे दिखाएंगे? तो उस केस में एडवाइजेबल है कि आप नीचे एक नोट दें कि भाई ग्रेचुटी का जो प्रोविजन किया है वो ग्रुप एज अ होल के बेस पे किया है, सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, बट इट्स एडवाइजेबल टू डिस्क्लोज दैट बाय वे ऑफ अ नोट, आप उसको ओमिट नहीं कर सकते। कॉमन रजिस्टर्ड एड्रेस मैंने एग्जांपल दिया आपको। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नो नीड टू गिव इंटर ट्रांजेक्शन, आपके अगर ए और बी के ट्रांजेक्शन एलिमिनेट हो रहे हैं ऑब्वियसली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स में नहीं आएंगे, बट यहाँ एक एग्जेम्पशन है। अगर आप सेबी का डीआरएच, सेबी के लिए डीआरएच भी फाइल करें, अगर कंपनी लिस्ट हो रही है तो जो इंटरकंपनी एलिमिनेशन ट्रांजेक्शन होते हैं वो भी रिपोर्ट होते हैं इन दैट फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्लोजर। नफरा वी हैव डिस्कस, नफरा बहुत वेटेज देता है आरपीडी को, और हर रेगुलेटर बहुत सेंसिटिव है, और कुछ भी होगा, जैसे टी ब्रेक में हम बात कर रहे थे, एक सर बता रहे थे कि आजकल रेगुलेटर से कोई भी आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, सीएसआर सॉफ्ट कॉर्नर या इजी पॉइंट है कोई भी चीज़ हैमर करने के लिए, तो आरपीडी में अगर कुछ होगा तो आपको ही पहले पकड़ेंगे, और काफ़ी चीज़ें हाइंडसाइट में अवेलेबल होती है। सो यू शुड ऑलवेज बी विजिलेंट, आपका डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग होना चाहिए, प्रोसीजर स्ट्रांग होना चाहिए, और मेरा एडवाइस है कि ये सारा काम जो भी आपको करना है आप अपने इंटरिम पीरियड में करिए। नवंबर दिसंबर जो कंपेरेटिवली लीन होता है, आपके पास टाइम होता है, उतना टाइम कैप्चर कर लीजिए, फिर हो सकता है 3 महीने में कोई नई पार्टीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आती है तो, अदरवाइज आपका प्रोसेस पूरा हो जाता है, यू आर गुड टू गो एट द एंड ऑफ द ईयर टू मेक अ डिस्क्लोजर, तो आपके लिए हैंडी हो जाता है। सेबी नफरा ने कमेंट किया है जो हमने डिस्कस किया, उनका नीड है कि ऑडिटर्स आर्म्स लेंथ वगैरह के ऊपर भी कमेंट करें। फिनटेक कंपनी भी हम डिस्कस, जस्ट 2 कपल ऑफ केस स्टडीज़ हैं पॉइंटर्स के लिए, छोटे से हैं सबकी नॉलेज के लिए। एक कंपनी बोलती है कि मुझे
रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं देना है डिस्क्लोजर के तौर पे, बिकॉज आई एम बाउंड बाय कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर नॉट टू डू सो। तो कॉन्टेक्चुअल अरेंजमेंट के हिसाब से मुझे नहीं देना है। क्या वो शेल्टर ले सकती है कंपनी? नहीं ले सकती। आपने कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी बनाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा अगर वो आएगा तो यू हैव टू कंप्लाई विद दैट। देन द सेकेंड थिंग, फॉर निल मॉनेटरी कंसिडरेशन, जैसे एम्प्लॉयज ऑफ होल्डिंग कंपनी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर द सब्सिडी कंपनी, जो एग्जाम्पल हमने लिखा, फॉर द सब्सिडी कंपनी इज ऑल्सो ऑक्यूपाइंग सम स्पेस इन द प्रेमाइसेस ऑफ होल्डिंग कंपनी, एच कंपनी इज नॉट चार्जिंग टू एनीथिंग टू एच कंपनी, is there a related party transaction and is there a need to disclose such transaction? Yes, transaction with non-monetary consideration. Friends, seniors, with this I am through with my presentation. Thank you very much for your patience hearing. I hope it was easy for everyone to understand and to digest. It was quite comprehensive, elaborative, and happy to answer any questions if anyone has. Yeah, please. As you said, common resources sharing and all that, then there would be